back to Inqua News. Chief Minister inaugurated the 1919 Sports Cricket Stadium built by Shri Kamla Prasad Yadav in the special presence of Team India's T20 captain Shri Surya Kumar Yadav. The ceremony was attended by BJP Goa President Shri Damu Naik, Industries Minister Marvin Godinu, MP Shri Sadanand Chetanavde, MLA Shri Krishna Salkar and other dignitaries. Good evening friends. सगळ्यात पयली आयच्या 1919 स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम हाचे उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक पहिले कॉंग्रॅच्युलेट करता ते हांव कमला प्रसाद यादव हेका. सगळे जाण नेटान कमला प्रसाद यादवाक ताळयो मारात. एक आमी पळयता आमच्या कडेन फक्त फातोर्डा स्टेडियम, ज्या स्टेडियमाचेर फुटबॉलूय खेळटा आनी क्रिकेटूय खेळटा असो एकूच स्टेडियम आशिल्लो. ताज्या उपरांत इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो क्रिकेट ओन्ली क्रिकेट स्टेडियम जो प्रायवेटली कन्स्ट्रक्ट केलो आनी आज ताजें लोकार्पण करपाचें भाग्य म्हाका लाभलें. आनी म्हज्या बरोबर इंडियन क्रिकेट स्टार कॅप्टन ऑफ इंडियन टीम श्री सूर्या कुमार यादव हांगासर आयला. ताजेय नेटान ताळयो मारून खूब खूब अभिनंदन करता. कालच्या मॅच विनींग जाल्या उपरांत सेलेब्रेशन करपा खातीर गोंयांत आयलो म्हणून परत एकदा इट इज नॉट अ इजी टास्क. कालूच मॅच जिखप आनी आज गोंयांत येवप हाच्या खातीर परत एकदा सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन हांव ताका खूब खूब कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी वेलकम करता. समेस्त गोंय सरकारच्या वतीन हांव कमला प्रसाद यादव हाजेंय अभिनंदन करता. खूब जाण टिका करपी आसतात पण कन्स्ट्रक्टीव काम करपी खूब कमी लोक आसता. ह्याय स्टेडियमाचेर वेगवेगळ्यो टिका जाल्यो, ताजेरूय जाल्यो आनी थोड्योश्यो माविनाचेरूय जाल्यो. बट ताणें इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड हाज्या थ्रू परमिशन घेवन रितसर ग्राउंड गोंया खातीर बांदला आनी गोंयच्या लोकां खातीर बांदला, इंटरनॅशनल क्रिकेटी खातीर बांदला. हे खरोखरूच मना पासून ताच्या खूब खूब अभिनंदन करता. गोंयांत खूब जाण म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीत स्पोर्ट्स आपल्या वेगवेगळ्या स्पोर्ट्सांनी आपल्यो टीम आसात बट तांच्यांनी खूब कमी लोकांनी अशा पद्धतीचें डेडिकेशन स्पोर्ट्स सेक्टरांत केलां. ह्या सुवाळ्याक व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त हांव चड वेळ घेवतना माविन, दामू, तानवडे, दाजी आनी कमला प्रसाद यादव म्हणजे इट इज आनी ताजी पुराय फॅमिली. इट इज अ क्रिकेट फॅमिली म्हटल्यार जाता. माय फ्रेंड रोहन इज ऑल्सो देर. कमला प्रसाद यादवाची स्टोरी तुम्ही पळयली आनी एट प्रेझेंट ही इज एन क्रिकेट फॅमिली म्हणपाक काय हरकत ना. तो क्रिकेटर, ताजी दोगांय भुरगीं क्रिकेटर, तांचेय हांव कॉंग्रॅच्युलेशन्स करता. आनी खरोखरूच परत एकदा म्हणजे इन फ्युचर वॉट एवर हेल्प ताका ह्या ग्रावंडा खातीर सरकाराच्या वतीन जो आमी करूं शकता तो डेफिनेटली सरकाराच्या वतीन ताका आमी हेल्प करतले. बाब सूर्या हांच्यांनी सांगलें की आपूण परत केन्ना तरी मॅच खेळपाक हांगासर येता. आय एम इनवायटींग बिहाफ ऑफ द गव्हर्मेंट अँड पीपल ऑफ गोवा. आय एम इनवायटींग हियर टू प्ले द मॅच. येवनी काय नाका, येवपाक जाय काय नाका. हांगासरी मॅच खेळपाक ताका आपयता. आनी आमी पळयता की गोंयांत आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो खेळा खातीर तयार केला सातत्यान जेन्ना गव्हर्मेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा तेन्ना तो मेंटेन उरना. बट तो प्रायवेट पब्लीक पार्टनरशीप हातूंतल्यान जर जालो जाल्यार तो खूब बरो मेंटेन उरपाक शकता. आमी नॅशनल गेम्सच्या वतीन पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वेरियस गेम्स, डिफरंट गेम्स, खो खो आसतले, व्हॉलीबॉल आसतले, टेबल टेनीस आसतले, बॅडमिंटन आसतले, बेसबॉल आसतलो, वेरियस इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला. बट तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आत्तां मेंटेन नासतना दिसता. बट इन फ्युचर गोंयांत अशा पद्दतीत स्पोर्ट्स कल्चर डेव्हलप जावपा खातीर वो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी फ्युचर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जावपी गोंयांतली जी एसोसिएशन्स डिफरंट आसात तांच्यांनी असो बरोबर मेळून आमी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करपाकूय तयार आसा, तांकां दिवपाकूय तयार आसा, जेणे करून गोंयांत एक बरो स्पोर्ट्स कल्चर डेव्हलप जातलो. आमी पळयता की गोंयांतले स्पोर्ट्स स्टार रणजी प्लेयर्स ते आयच्या व्यासपीठाचेर आसा. हांव तांकांय बी वेलकम करता. ह्या निमित्तान सगळे जाण हांगासर व्यासपीठाचेर आयिल्ले आसा. आनी आज तुमी सगळे जाण हे फक्त
इनॉग्रेशनाक येवंक ना, तुम्ही सगळे जाण सूर्याक मेळपाक आयल्या, हय काय ना? इंडियन क्रिकेटर्स होंगे, यंग क्रिकेटर होंगे जिनको आगे जाके बहुत कुछ अचीव करना होगा लाइफ में। आई एम श्योर मेहनत करते रहिए दिल से, और इस ग्राउंड पे मैं उम्मीद करता हूँ कभी अपॉर्चुनिटी दी अगर कमला सर ने तो आके यहाँ पे आप लोग के साथ डेफिनेटली खेलूंगा। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है वापस, आपको कोंकणी कैसे समझ में आ गई? क्या समझ में आ गया? कोंकणी, सर ने कोंकणी में बात किया, आपको सब समझ में आ गया कैसे? वो दिल की आवाज, ओहो दिल से बोला ना उन्होंने, इसलिए सब समझ में आ गया। पहले मैं कमला भाई को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अच्छा स्टेडियम बनाया है यहाँ पे, क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे याद है बहुत पहले इंटरनेशनल गेम हुआ था गोवा में, अभी यहाँ पे भी ये जो स्टेडियम बन रहा है इसमें अगर फर्स्ट क्लास गेम स्टार्ट हो और आगे इंटरनेशनल गेम्स होगा तो अच्छा ही होगा। सर जब आपने ग्राउंड देखा तो कैसा लगा? हरा अच्छा ग्रीन आउटफील्ड है, अच्छा लगा ग्राउंड यहाँ पे अच्छा देख के, और बारिश भी रुक गई अभी, बहुत अच्छा लग रहा है ग्राउंड देख के, और अच्छा लगा। देना चाहते हैं कि गोवा यंग स्टार को क्रिकेट का बारे में, गोवा में इधर स्टेडियम, गोवा की टीम है, मैं तो खेला हूँ उनके अगेंस्ट में भी पहले, डोमेस्टिक टीम है, अच्छा कर रही है बहुत सालों से, उनके लिए अभी एक और एक ग्राउंड मिल गया यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, मैच खेलने के लिए, बहुत अच्छी बात है।